फ्रेंड्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इनकम टैक्स की डेफिनेशन के लेक्चर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास बीकॉम पार्ट 2 एनुअल सिस्टम या ईडीसी का सेमेस्टर सिस्टम में से थर्ड सेमेस्टर, बीएस कॉमर्स के थर्ड सेमेस्टर, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड अदर बैचलर लेवल की डिग्रीज में टॉपिक डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट वन, इसमें जो डेफिनेशन है जो आज के लेक्चर में, वो फाइलर की है। सेकंड जो हमारे पास आज की डेफिनेशन है वो टर्न ओवर से मुतल्का है। जो थर्ड डेफिनेशन है वो हमारे पास एसोसिएट की है और फोर रियलिटी की है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, वो स्टूडेंट जो चैनल सब्सक्राइब कर सके हैं उनका शुक्रिया, और जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, बात करते हैं फाइलर की। फाइलर means any person whose name is in the active taxpayer list issued by the Federal Board of Revenue, आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल बार ऑफ रेवेन्यू, गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल ऑफ रेवेन्यू। द पर्सन इज होल्डर ऑफ द टैक्स पेयर्स कार्ड। दिस डेफिनेशन has been included through Finance Act 2014 and then amended in 2018. It is important because rate of tax for the filer and non-filer are different in many cases. The definition of filer has been omitted through Finance Act 2019, so it will not be applicable for the tax year 2021 and onward. अच्छा जी, हम बात करते हैं आज की सेकंड डेफिनेशन जो कि है टर्नओवर। टर्नओवर से मुराद है सेल, the gross receipt from the sale of goods excluding the sale tax and federal excise duty or any other discount shown on the invoice। मींस के आपने इनवाइस के ऊपर जो किसी को डिस्काउंट दिया है, जो आपका सेल टैक्स है, उसके अलावा जो आपके पैसे हैं वो रिटर्न है। ग्रास फीस ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज फॉर गिविंग द बेनिफिट इंक्लूडिंग द कमीशन, ग्रास रिसीट फ्रॉम द execution of the contract where the company is the member of association of person, the company share of the amount stated above, the amount received, fees, commission covered by the final tax liability is separately paid or payable excluding the turnover। अच्छा जी, एसोसिएट किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो। टू पर्सन शैल बी एसोसिएट वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इन सच that one person may act according to the instruction of the other person. Both person may act according to the instruction of the third person. An individual or relative of individual, member of association of person, trust and any person who benefits from the trust, a company and its shareholder who control 50% or more voting power, right to dividend or right to capital. Two companies shall be associate if a person either alone or together with the associate control 50% or more voting power। बात करते हैं रियलिटीज की। बेसिकली जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करने के बदले में जो आप मुआवजा लेते हैं या देते हैं, उसको रियलिटी का नाम दिया जाता है। रियलिटी मींस एनी अमाउंट पे और पेबल whether the prodigal or lump sum as a consideration for the use of right to use any patent, invention, design, model, secret formula or the process, trademark or any other like property, the use of or right to use any copyright of literary, artistic, scientific work including film, videotapes or tapes for the use in connection with the television, radio broadcasting, but shall not include consideration for the cinematography, the receipt or right to receive any visual image, sound, both transmitted by satellite, cable, optic fiber, similar technology in connection with the television, radio, the supply any technical, commercial, scientific knowledge, experience, skill, the use of the right to any industrial, commercial, scientific equipment, supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to any property, disposal of any property or right referred above। So हम कह सकते हैं कि हम जो भी किसी भी चीज का कोई ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को, इन्वेंशन को, पेटेंट को, डिजाइन को, मोनो को, लोगो को अपने नाम पर रजिस्टर करवा चुके होते हैं, या कोई सीक्रेट फार्मूला या कोई मेथोडोलॉजी, उसको यूज करने के बदले में जो हमको मुआवजा देते हैं या लेते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं रियलिटी का। सो ये हमारे पास
आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने 4 चीज़ों को डिस्कस किया। इसके नोट्स आपको चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड करूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। इन लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग डेडिकेटेडली तौर पर इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल, सेल्स के न्यूमेरिकल और अदर सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।